Good morning, students. Today we are going to do the last poem of the book Flamingo. The poem is Aunt Jennifer's Tigers, written by Edwin Rich. So Edwin Rich was born in 1929 in Baltimore, Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life a woman experiences. Means, in this poem, the experiences of married women are given by the poetess. That the married women have to do the household work also, whether they are engaged in the other works. कि वो बाहर जितनी मर्जी काम कर लें, लेकिन जो घर के काम हैं, जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, those responsibilities the ladies can never deny. उनको कभी भी छोड़ नहीं सकती हैं. So Edwin Rich's poem Aunt Jennifer's Tigers narrates the not so happy experiences of marriage. Here it is told by the poetess that the married women do not have happy married life experiences. Aunt Jennifer makes prancing, sleek and chivalric tigers in a panel. In this poem, it is told that Aunt Jennifer, who is the main character, she is doing the work of embroidery, and in embroidery she is making the tigers in the panel, but she is in the grip of sufferings and terrors. They have crushed her and affected her married life. Means Aunt Jennifer thinks that she has a lot of burden after marriage. Means she has to do the household work and the other jobs also. So she is having the fearful experiences. She has not yet freed herself from bitter experiences of the past. It is ironical that she can create such sleek and prancing tigers. So the main points are Aunt Jennifer's Tigers. इस poem में क्या बताया है poetess ने? That Aunt Jennifer's Tigers jump over across a screen. कि जिस पैनल पे आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रही है, पैनल पे जो उसने कपड़ा अटैच किया है और उस पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है, एम्ब्रॉयडरी में वो क्या बना रही है? शी इज क्रिएटिंग द सीन ऑफ अ फॉरेस्ट, ग्रीन ट्रीज एंड येलो कलर्ड टाइगर्स. They are sleek and chivalric. They pace with confidence and certainty. She is using ivory needles. Ivory means made of the elephant teeth. तो जो उसके पास नीडल है एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, वो एलिफेंट टीथ की बनी हुई है. एंड फ्लटरिंग हर फिंगर्स इन द वूल टू क्रिएट हर टाइगर्स. और जो क्लॉथ है वो वुलन है. हर फिंगर्स फाइंड इट हार्ड इवन टू पुल द आइवरी नीडल्स. द हैवी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड स्टिल सिट्स अपॉन हर हैंड्स. द हैवी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड मतलब कि अब उसकी मैरिज हो गई है और जो मैरिज के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन सबको लेके शी इज वेरी मच fearful. She is very much frightened. Those sufferings and troubles that crushed her during her married life have possessed her mentally and physically. When Aunt Jennifer is dead, her tigers will survive. And secondly, she is telling about the difference of the human life and the other materialistic things. The materialistic thing is the
embroidery which is done by Aunt Jennifer, and Aunt Jennifer herself is a human being. कि जो humans हैं they are short lived, कि उनकी life छोटी होती है, मतलब वो मर जाते हैं एक टाइम पे, लेकिन जो materialistic things हैं they never die, they will go on. So it is said that when Aunt Jennifer will die, the tigers will survive because these tigers are non-living things. ये टाइगर जो एम्ब्रॉयडरी की फॉर्म में है वो नॉन लिविंग है, सो दे विल ऑलवेज सर्वाइव एंड दे विल गो ऑन प्रिंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड. और आंटी की डेथ के बाद भी, आंट जेनिफर की डेथ के बाद भी एम्ब्रॉयडरी में जो टाइगर्स हैं वो ऐसे ही दिखेंगे जैसी एम्ब्रॉयडरी हुई थी. मतलब वो कैसी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, दैट द टाइगर्स आर गोइंग टू मूव वन स्टेप फॉरवर्ड, कि टाइगर्स एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं. यू आर एबल टू सी द पिक्चर इन द ऑन द पेज ऑल्सो, the way in which the embroidery is done. So, let us start. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. So, Aunt Jennifer is doing the work of embroidery and she is making the tigers. किस चीज एम्ब्रॉयडरी में वो क्या कर रही है, क्या बना रही है एम्ब्रॉयडरी में, कौन सा डिजाइन है, द डिजाइन ऑफ टाइगर्स. Prance across a screen. Prance means jump. It is shown in the embroidery that the tigers are going to jump, कि वो आगे बढ़ने जा रहे हैं. Bright topaz denizens. Bright topaz means yellow colored. Denizens are shining of a world of green. World of green means the tigers are mostly found in the forest, and in the forest there are trees. The trees are of green color. So it is said that the tigers shine, the yellow color of the tigers shine in the greenery of the forests. Are these two lines clear to you? Clear हो गई कि येलो कलर इसलिए कर रही है एम्ब्रॉयडरी में यूज बिकॉज द टाइगर्स आर ऑफ येलो कलर, एंड ग्रीन कलर के जो पेड़ हैं उनकी एम्ब्रॉयडरी की जा रही है. एम्ब्रॉयडरी में ग्रीन कलर जो है दैट इज गिवन टू द ट्रीज, एज इन द फॉरेस्ट द ट्रीज आर ऑफ ग्रीन कलर. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. नाउ इन द एम्ब्रॉयडरी शी इज एम्ब्रॉयडरिंग द men also, the human beings also. The human beings are standing under the trees. अब एम्ब्रॉयडरी में वो और क्या कर रही है, सेम पैनल पे जो टाइगर है दैट इज गोइंग टू जंप एंड द ह्यूमन बीइंग इज स्टैंडिंग. इंसान को खड़ा दिखाया गया है और टाइगर जो है वो जंप करने वाला है. बट neither the tiger is fearing from the man nor the men are having the fear of tigers. दोनों को ही एक दूसरे का डर नहीं है. Why? Because it is not reality. ये रियलिटी नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी है. ये सिर्फ एक पेज पे सपोज हम पेंटिंग करते हैं तो उस पे हम चाहे स्नेक बना दें और साथ में एक इंसान खड़ा कर दें तो कोई डर की बात नहीं है. लेकिन अदरवाइज किसी को स्नेक दिख जाए तो शोर मचा देते हैं कि वहां पे सांप है, बिकॉज इट कैन हार्म द ह्यूमन बीइंग्स. सो दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. सो the tigers have no fear of the men who are embroidered by Aunt Jennifer under the trees. They pace in sleek, chivalric certainty. Pace means run fast. Sleek means elegant. Chivalric
honorable, certainty, confidence. The tigers are running fast. The tigers are shown running fast in elegant and honorable way, and the tigers are looking very confident. कि जो tigers हैं वो भी बहुत confident लग रहे हैं कि उनको किसी चीज का कोई डर नहीं है. Is it clear up till here? Clear है सबको? Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Wool because the panel on which she has attached the cloth is woolen. So, Aunt Jennifer's fingers are fluttering means vibrating through the wool. Find even the ivory needle hard to pull. So, ivory means made of elephant teeth. कि जो नीडल है जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, दैट इज नॉट चीप बट दैट इज कॉस्टली नीडल. द नीडल इज मेड ऑफ आइवरी, बट इवन शी इज फीलिंग दैट द आइवरी नीडल इज वेरी हार्ड टू ड्रॉ. पुल का मीनिंग यहाँ पे है खींचना, की जो कपड़ा है उसमें से नीडल वो नहीं खींच पा रही है आसानी से. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब क्या है, वो जो काम है वो प्रॉपरली क्यों नहीं कर पा रही है? Due to the heavy weight of Uncle's wedding band. Uncle कौन है यहाँ पे? Uncle Jennifer, जो Aunt Jennifer के husband है. Actually, the man is very strict. Uncle is a strict type of man. That's why whenever she is doing the household works, at every time there is the fear of uncle in Aunt Jennifer's mind. कि अंकल जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी है कि थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो आंटी को डांट देता है. इसलिए जब आंट जेनिफर अपना काम कर रही है, इवन एट दैट टाइम द स्ट्रिक्टनेस ऑफ अंकल इज देयर इन हर माइंड. दैट्स व्हाई शी इज थिंकिंग दैट it is even difficult for her to draw the ivory needle. मतलब उसके हाथ कांपते क्यों है? वो जो अंकल का डर है वो उसके मन में एक कंपन पैदा करता है और इसलिए वो जो अपना काम है एम्ब्रॉयडरी वाला वो भी प्रॉपरली नहीं कर पा रही है. Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. So यही है इसका कि जो अंकल का डर है that is always there in her mind. So is stanza 2 clear to everyone? When aunt is dead, her terrified hands will lie. Still ringed with ordeals she was mastered by, the tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. So, when aunt is dead means when Aunt Jennifer will die, her terrified hands will lie. Terrified means frightened hands. Will lie means will tell the story of Aunt Jennifer's life which she spent in the house of Uncle Jennifer. कि आंट जेनिफर की डेथ के बाद जो भी उसने काम किया होगा वो काम आंट जेनिफर की स्टोरी बताएगा कि उसने अंकल जेनिफर के घर में कैसा टाइम स्पेंड किया था. Still ringed with ordeals she was mastered by, because she was mastered by कौन से काम की वो मास्टर थी? She was master in embroidery. So still ringed with ordeals. Ordeals are the difficult experiences. Ringed with means surrounded by. She was always surrounded by the difficult experiences. हमेशा कुछ न कुछ डिफिकल्टी उसके आसपास घूमती रहती थी.
and she was mastered by, but even then she was controlled by many of the works. मतलब कई से ऐसे काम थे जिनमें वो अपने आप को बिजी रखती थी और जिन्होंने उसके माइंड को कंट्रोल किया हुआ था. The tigers in the panel that she made, and even after the death of Aunt Jennifer, the tigers which she had made will go on prancing, means will go on moving proud and unafraid. कि आंट की तो डेथ हो जाएगी, लेकिन आंट जेनिफर की डेथ के बाद भी उसने जो भी वर्क एम्ब्रॉयडरी का किया है, दैट विल रिमेन एज इट इज. सो नाउ we'll do the question answers, the exercise. The first question is, how do denizens and chivalric add to our understanding of tigers' attitude? Tigers, like all beasts of prey, are denizens of the forest. They live far away from human settlements. That the tigers are wild animals, and that's why they are made to live in forests. They don't spend their life near human beings. They are called chivalric. This shows the majestic and honorable position that they occupy in the world of animals. Second question is, why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through the wool? Why do you think that Aunt Jennifer's hands are moving through the wool? So, Aunt Jennifer's hands move through the wool. They are weaving tigers in the panel. Aunt Jennifer's hands are weaving, क्या बना रही है पैनल पे? टाइगर्स को बनाया जा रहा है. She is finding the needle hard to move. उसको ऐसा लग रहा है कि नीडल को चलाना बहुत मुश्किल है. The unpleasant and bitter experiences of her married life lie heavy on her. Next is, what is suggested by the image? Massive weight of uncle's wedding band. So, massive weight of uncle's wedding band, इसका मीनिंग क्या है? That जब उसको शादी के बाद जो लाइफ है वो एक वेट लग रही है, भार लग रही है, इट मीन्स दैट शी इज नॉट स्पेंडिंग अ हैप्पी लाइफ इन अंकल जेनिफर्स हाउस. सो it is symbolic of weight of harsh and difficult experiences of married life. The wedding band represents the unbreakable bond of marriage between the husband and wife. कि जो वेडिंग बैंड है वो क्या है कि अब उनके बीच में एक ऐसी बॉन्डिंग है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है कि ये तो है नहीं है कि अब उसको अंकल जेनिफर पसंद नहीं आया तो छोड़ छाड़ के चली गई. ठीक है, आजकल तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट. लेकिन जब कि ये पोएम लिखी हुई है, एट दैट टाइम इट वाज सेड टू द ladies that after the marriage the husband's home is your home and you are not to leave that, right? So that's why it is said that the massive weight of uncle's wedding band, that she was not happy after the marriage. Next is, of what or of whom is Aunt Jennifer terrified with in the third stanza? थर्ड स्टेंजा में, लास्ट स्टेंजा में वो किस चीज से डरी हुई है? The terrified hands are the unhappy memories which are still fresh in her mind. She had passed through many testing and horrible times during her married life. Those ordeals crushed and suppressed her. She will get no respite from them even after death. What are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? Aunt Jennifer is mentally surrounded by the ordeals she faced during her married life. The poem narrates the not very happy experiences of marriage of Aunt Jennifer.
The word ringed is significant. It makes it clear that the vicious grips of her unhappy married life are still holding her tightly. Means whether she is happy or she is unhappy, but she has to stay there with Uncle Jennifer. So there are 3 questions left. You will do the answers of these questions yourself. So that's all for today. Have a nice day.